हेलो, मैथ एक्सॉन में आपका स्वागत है। आज हम लोग गेट 2017 में आए हुए लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक सीरीज चलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको गेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें हम शुरुआत लीनियर अलजेब्रा से कर रहे हैं, जहां हम गेट 2017 से लेकर गेट 2024 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ये एक सीरीज की तरह प्लेलिस्ट की तरह बनाई जाएगी। कृपया हमारे साथ बने रहें। ये न्यू यूट्यूब चैनल है, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको यहाँ पे नए सिरे से नए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उत्तर या अपनी जो भी विचार देना चाहते हैं कमेंट के थ्रू हमें भेज सकते हैं। तो हमें एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है V, जो और पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस है जिसकी डिग्री एट मोस्ट 2 है, और फिर लेट f such that v tends to R be a linear functional such that f1 plus x equal to 0, जहाँ पे हमको दो वैल्यू प्रोवाइड कराई गई हैं, f1 plus x equal to 0, कॉमा f1 minus x square equal to 0। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि देन f1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे कि हमको अगर पॉलिनोमियल एटमॉस डिग्री 2 का दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि इसमें जो कोफिशिएंट है या जो इसकी बेसिस है उसकी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। तो पहले जो हमको दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनसे तीन फंक्शन दिए हुए हैं, सॉरी, उससे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एटमोस्ट 2 डिग्री पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसका डायमेंशन हम बना सकते हैं कि एटलीस्ट थ्री डायमेंशन का मैट्रिक्स होगा, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स हमको फाइंड कर मिलेगी, जो हम इस इक्वेशन के थ्रू बना सकते हैं। तो पहला जो हमारा f1 प्लस एक्स है, उसका अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाए उसके थ्रू, तो उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो हमारा होगा 1 1 0। दूसरे को देखें, सेकंड जो हमारा है ये वाला, उसमें बनेगा हमारा 1 0 -1। थर्ड पे हमारा बनेगा 0 1 -1 and 1। This is the 3x3 matrix. Then we check the linearly independent dependent. So basically we find the determinant of this matrix. Then it's a non-zero. Then it's a all function are linearly independent. Then we find this determinant of this question. It's 1 1 0 0 -1 and -1 0 0, sorry, it's a -2 and 1. When with first 10 second, this is the 2 which is not equal to 0. Then these rows are the linearly independent. Then given that is a linear functional, which is the more important
thing in this question. We can write 1 plus x square in a linear combination of these three functions: a into 1 plus x, b into 1 minus x square, plus c into x square minus x. Now when we compare with these equations, so we find a plus b equal to 1, a minus c equal to 1, and minus b plus c equal to 1. These are the three equations. When we solve, then we find, firstly we solve a minus c and b plus c, then we find a minus b equal to 2, then we a plus b equal to 1, we solve that, and 2 equal to 3, a equal to 3 by 2, and we solve the v equal to minus 1 by 2, and c equal to 1 by 2. You can solve also in a copy. Then we find these value. Given that in a question this is a linear functional, then we provide f into 1 plus x square, apply both side f function f a 1 plus x plus b 1 minus x square plus c x square minus x. These are the question. When we applied a is the constant, then it's become f into 1 plus x plus b into f 1 minus x square plus c into f x square minus x. Then we find value to a 1 plus x, given that is a 0, a into 0 plus b into 0, where 1 minus x square is also 0, plus c is c will be find is a 1 by 2 into x square minus x, f x square minus x is equal to 2. Then we solve this, to the answer is 1. Then the right answer of this question should be 1.